अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बना के बल्कि पका के लेके आए। इसमें हम वेरिएंट्स को ऑटोमेट करके दिखाएंगे। मतलब वो ऑटोमेट क्या करना है, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो वेरिएंट्स की लिस्ट एक ड्रॉप डाउन में अवेलेबल कर देगा। जैसे ही आप कोई मॉड्यूल और ये रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो जाएगा, जाके देखेगा क्या आपके पास एक वेरिएंट की शीट नजर आ रही होगी। इसके अंदर जितने भी वेरिएंट्स आपकी सिलेक्टेड रिपोर्ट के होंगे खुद ब खुद आ जाएंगे। ये आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिस्टम आपकी सिलेक्टेड रिपोर्ट पे जाकर वहाँ पे देखेगा, अगर कोई वेरिएंट्स बने हुए हैं तो उन वेरिएंट्स को ड्रॉप डाउन में अवेलेबल कर देगा। आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। आपको इसमें तीन वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं। आपने कहा जी मुझे फर्ट देखना है। ठीक है ना, इसमें आप को अगर फर्स्ट देखना है ये, ठीक है, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कर दें। पहले जाहिर है लॉग ऑन करेंगे, और लॉग इन करने में मैंने लॉग इन किया हुआ था और इसको आपने एग्जीक्यूट कर लिया। तो अब आप जाके आप देखें कि ये इसने फर्स्ट को एग्जीक्यूट करके आपकी लिस्ट जो है वहां पे दे दी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहीं छोड़ के आते हैं और आकर यहाँ पर आप पे कर देते हैं और अब वो ये प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। आप कहते हैं ओके वेट मिनट, मुझे आप हेल्प भी दिखा दें। ठीक है, आप हेल्प के देखें, सीधे की अब आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं। वो लॉगिन एक मरतबा हुआ हुआ है ना, तो आप देख रहे हैं कि वो सैप इजी पे खुद पहुंचता रहेगा ऑटोमेटिकली। सैप इजी एक्सेस और यानी जो कि इनिशियल साइन ऑन स्क्रीन होता है जिसके अंदर आप टी कोड डालने के लिए तैयार होते हैं, वो खुद ब खुद वहां पे मेक श्योर करेगा कि आप यहाँ पे हो ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके। ये उसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया। ये गया एसी 38 पे और उसने इसने जाकर आपके दिए हुए वेरिएंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसने उसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये हेल्प यानी सेम जो है मटेरियल जो है ये इसने शो कर दी। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे वापस जाओ एक्सेल पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे ओके करते हैं। इस दौरान में जब आपने ओके किया तो ये प्रोसेस कंप्लीटेड का मतलब ये है कि इसने ये वापस सैप इजी, ठीक है, इस पोजीशन में जाए ताकि आप अगर री एग्जीक्यूट करना चाहें किसी भी रिपोर्ट को तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने कहा कि जी मुझे इसमें ये वेरिएंट की बजाय मुझे फर्ड दिखा दें। ठीक है, आप फर्स्ट में एग्जीक्यूट कर दें इसको, तो अब ये देखें ये जा रहा है उसमें ऐसी 38 में प्रोग्राम को रन करेगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया जब आ जाएगा उसके अंदर फर्स्ट को ले लिया, ये इसने फर्स्ट को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और ये एक एनहेंसमेंट हमने की थी। हमने कहा कि आपको पसंद भी आएगी और आपको ये शो कर दें कि कितना यूजफुल है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस टूल को बीइंग एन डेवलपर इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए टाइम सेविंग का सबब बनेगा। आपका टाइम भी बचेगा और राइट ऑन द टारगेट आपको लेके जाएगा। अगर ये मैसेज आए तो ये तो एसएपी वाले सब जानते हैं कि वो आता है। ठीक है ना, आप इससे नो करेंगे इस दफा। अगर दोबारा आपको चलाने के लिए आपको लॉग ऑन करना होगा। आप इसे लॉग ऑन करके जब ये एसएपी पे आ जाए आगे सारा वही है। अगर ये मैसेज आए तो आप इसे एंटर कर। ठीक है, That's it। अब आपने कहा कि जी मुझे आपको जो है मेरे पास कंट्री की रिपोर्ट चाहिए है। ठीक है, से कॉमन, हाँ, कॉमन में आपने कहा कि ये कंट्री लिस्ट चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि वहां से चेंज होते ही वो वेरिएंट भी हट गया और ये कंट्री लिस्ट जो है वो आपकी तैयार हो गई। यहाँ पर कंट्री लिस्ट का अगर कोई वेरिएंट बना होगा तो वो लाकर आपको बोलना ये या अपडेट करने की कोशिश करेगा तो छोड़ देगा। ठीक है, उसमें कोई वेरिएंट नहीं था तो उसमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सही, ये है। अगर आप अब आपको एक दिलचस्प चीज ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि अगर हम आपको वहाँ पे एक्सेल पे ले जाते हैं और हैंग ऑन, ठीक है, ऐसे एंटर हम ये जो है ये वेरिएंट की शीट में से हम ये एंट्री उड़ा देते हैं बस। ठीक है, हम उड़ा दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप जब एमएम की रिपोर्ट्स लेंगे, ठीक है, और आप अपने मटेरियल टाइप मटेरियल ग्रुप वाली रिपोर्ट लेंगे तो यहाँ पे वेरिएंट कोई नहीं आने लगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज़ाहिर है पहले ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर भी हो। ठीक है, तो आप पहले इसको हम मेक श्योर करें कि ये निकल लिया स्टेप इजी पे हो। ये वैसे कर लेता है, इसी वजह से वो बैक नहीं जा पाया था नहीं।
उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। आपको ये चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए इसको SAP इजी एक्सेस इनिशियल स्क्रीन पर होना जरूरी है। ठीक है, ये आपने देखा कि इसने ये तीन शो कर दिए कि इनमें से आपने कोई वेरिएंट सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप कहें ठीक है मुझे कोई वेरिएंट नहीं चाहिए, मुझे इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो वो ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देगा irrespective ऑफ एनी सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट। ठीक है, अब यहाँ से आप वापस आते हैं मेरे पास और आप यहाँ पर आके ओके करते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब आपने कहा कि मैं वेरिएंट्स की शीट जिसमें से हमने हटा दी थी, आप देखेंगे वो तीनों एंट्रीज, तीन एंट्रीज उसने दे दी कि ये जो रिपोर्ट आप रन कर रहे हैं इसके अंदर ये तीन वेरिएंट्स हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्यों नहीं आया? वो अब आएगा जब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, और अब इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा। इसमें अब आप सेलेक्ट करें, देखिए इसमें ऐसे कोई वेरिएंट आपको एंटर नहीं करना पड़ा, वो खुद लेके आया, SAP से खुद लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और इसे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये उसने एग्जीक्यूट भी कर दिया और आपका अ, जो डिजायर्ड वेरिएंट है उसको सिलेक्ट किया फर्स्ट और फर्स्ट डिस्प्ले कर दिया। ठीक, इस तरह से अगर आप इसको बेशक यहाँ पे छोड़ देंगे वो खुद पहुंच जाएगा, जैसे ही आप उसे ओके करेंगे यहाँ से तो आप देखिएगा कि SAP में वो वापस सही जगह पे जहाँ पे टी कोड डाला जाता है उस पर पहुंच चुका हुआ है। आपके इंतजार में है कि आप कौन से रिपोर्ट रन करना चाहते हैं। आप अगर जो है हेल्थ की रिपोर्ट रन करना चाहते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर, आप देखिएगा कि ये आपका सारे काम जो आप करते, आप इसमें ऐसी 38 करते, इसमें जाते, इसे रन करते, इसमें से वेरिएंट लेते, और वो सारे काम इसने खुद कर दिया। ठीक है, और आपको सही जगह पे ले जाके ये छोड़ना इसकी ड्यूटी है। इंशाल्लाह ये करता रहेगा। आप अपनी फोकस जो है वो फर्दर एनहेंसमेंट और उसमें करें, और इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जो है एनहेंसमेंट इस टूल में। ये ये टूल हमने डेवलप किया है वेपर्स को असेस करने के लिए, ये जो कि एक्सेल की महारत भी रखते हैं, रखना चाहते हैं एक्सेल और VBA का इस्तेमाल आपके बहुत काम आएगा। बीइंग एन वेपर, बीइंग एन ऑटोमेशन एक्सपर्ट, आपको VBA और स्क्रिप्टिंग, सैप कोई स्क्रिप्टिंग अगर आपको आती है और साथ में आप ABAP की भी जो है नॉलेज रखते हैं, तो बिलीव मी आपको बहुत जो है तरक्की के रास्ते में गामूंगा है। ठीक है, तो ये चीज बताना चाहता था मेरे दोस्तों को। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। So here our quiz we are making ready for you, in which we will be entering a question and we will be uh, uh, entering the answer of that question and the choices and show you how it appears in the drop down automatically, right? So what we do is, since our question is related to the SAPGUI scripting and VBA, so and this is the chapter which is going almost 6 or 7 questions, or six, I think, 4, 5, 6, right? So let's add. So how many? These are the count is six. So 6 questions you have in this quiz. You see, 1 of 6 has been attempted here. Okay, six. This six is related to the count of this chapter in there. So now we are going to add a new question. So since we are adding a question regarding the SAP quiz scripting, so we will insert the row here and we will copy this down. Yeah. Okay. And here we will copy this as well down. Okay. And here we are going to write the question. Here we are going to write the question that which of the following SAP GUI script uh, exits you, exits, that is F3. You remember in SAP, when you press F3 function key, uh, exits from, it exits from the current screen.
or program, right? Okay, which of the following? Okay, so the right answer we will put here, and we will give some choices. One of them has to match with this right answer. Okay, so I don't remember what is that exactly the script is. Hmm? So how can I write this question? Because I know it's very easy. I will go to my program and go to the execute, and I will go to the assign macro. I will go to edit it, and here plenty of time this key has been used. Yeah, on air. Yeah, this is exiting. You know, on air this is exiting. Yeah? So each time when it is starting, it is making sure that if some screen is left open, so let it go out and take it 3 times at least uh, to to the position where we can enter a T code, right? Say now here the T codes are being entered, right? And when in the end, when there is a OK button shown, after the OK button, it is going to what? To do the F3 again to make sure that uh, the program is exited, right? It exits and it displays the process complete, right? So this is where uh, after this it will exit everything. It will exit. It will press F3, and F3 command we have copied already. Okay, we have shown you that what is the F3 command. This is the F3 command. It is being used in a do while and making sure that the SAP easy access screen is not active. Excuse me. This is the title of the text of the window. If it gets to SAP easy access, it means it has reached to our desired position. So this is the do while loop once the OK button is pressed, right? So let's press this and put that back into our quiz. And here we want us to enter the answer. This is the answer, right? And one of these things, these choices has to be the right answer. Let's press Control V, sorry, F2, Control V, Control Enter. Okay, so we decide, okay, we take this on the first choice as the right answer, and here we say we say 12 maybe or 0. This is 4 and 5, for example. This. But this is the right answer, that it sends the T to 3, and this is going to match. Now let's see how does it appear in our quiz, right? So what we do here is we select SAPGUI-Scripting, okay, automation. It is, I think, this one, automation using SAPGUI-Scripting. What is the name? The name of the chapter is VBA and SAPGUI-Scripting. This is the chapter name. Okay, let's see the VBA and the SAPGUI-Scripting. Right. So this is now 7. Okay, now you have 7 questions. Each time when you attempt to share, which of the following command is equivalent to pressing F8, execute? F8 is this, I think. Yeah, no, I'm sorry. It is actually this, right? Okay, so it has deducted 1.5 marks out of my score. Okay, now which of the following commands is equivalent to striking enter key? Enter key is this, yes, okay, and this is the command my T code. In the above statement is a variable that contains the SAP transaction code. That's right. Okay, so we have attempted so far. Okay, and on those right now go sub command calls a subroutine within a sub procedure. Which of the following is not a subroutine within executed? Yes, of course, this is a subroutine. This is subroutine. This is not a subroutine, right? Okay, so return
Will it terminate the program? No. The returning statement, it returns back the control to the following. That's the right. Okay. And a set of input parameters and filters that you define to view specific subsets of data of a report is called a variant, right? It's called a variant, right? Okay. Which of the following SAP GUI script exit F3 from means exit or equivalent to F3 from current screen? So this is the question which we added. This is the question number 7 as well. Okay. So what we did. So what is the F3 equivalent? Of course, it is this. That's right. Okay. So you have completed it. Okay. So this is the quiz file. The link of this file is available in the description of this video. Thanks for watching.